every election, youth matter, and every political party woos them. And in Rajasthan, what really concerns them is the fact that what future do they have in terms of jobs, in terms of education, and paper leak issue is something which is really emerging as a big talking point. And in fact, I have 5 such young boys who are very disappointed because they studied hard, they're looking for a better future and looking for change, but that change didn't happen because their papers leaked. So, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माइक आप इनको दे दीजिए। हाँ, जी मैम, क्या हुआ था आपके साथ? मैम 2021 की वैकेंसी थी और 2022 में उसका पेपर लगा, रद्द हो गया। उसके बाद में फिर 2023 19 फरवरी 2023 को CHO का पेपर लगा। जैसे पेपर देके बाहर निकले, पेपर व्हाट्सएप पे पहुंच चुका था। ना तो गवर्नमेंट ने उसको रद्द माना, ना उसका रिजल्ट आया। मतलब पेपर अभी तक रुका हुआ है मैम। अभी तक ना तो रिजल्ट आया। कुछ कह रहा है आपको, आप तो गुहार लगाए होंगे। गुहार लगाई है मैम। SOG बोल रही भाई पेपर रद्द हुआ है और राजस्थान की जो सरकार है वो मान नहीं रही भाई पेपर। 2-3 साल तो हो गए अभी मैडम, साल भर होने को आए, ना तो रिजल्ट आ रहा है, ना गवर्नमेंट ये मान रही भाई पेपर लीक हुआ है। आपने क्या सोच के वो एग्जाम दिया था? आप मतलब आपकी क्या इच्छा थी? मैडम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने की इच्छा थी। उससे पहले भी वो वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी बहुत अच्छी थी वो, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2 साल से। मतलब इसमें नहीं हुआ था अपना, इसमें हो जाएगा। अब उसके बाद में मैडम मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ 12,000 रुपये की। उसी वैकेंसी का इंतजार है, उसका रिजल्ट आ जाए तो कुछ भला हो जाए मैम। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। कहने वाला कोई कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं है। आपके साथ भी क्या हुआ था? मैम मेरे साथ भी यही सेम घटना हुई थी। बस इनका CHO था और मेरा SI का पेपर था। SI का पेपर मेरा 2021 के अंदर हुआ था मैम, 3 चरणों में, 13, 14 और 15 सितंबर को। मेरा 14 सितंबर को पेपर था। और मैम जैसे ही पेपर देके बाहर निकलते हैं, 15 सितंबर वाली शिफ्ट के दिन शाम को पता चलता है कि ये पेपर भी लीक हो चुका है। और व्हाट्सएप के अंदर ऊपर पेपर आ जाते हैं और उस कक्ष के फोटो आ जाते हैं कि कौन से रूम के अंदर से ये फोटो लिए गए हैं। वो इसके OMR के पेपर बाहर आ जाते, फोटो बाहर आ जाते हैं, उसका वीडियो वायरल आता है बाहर भरते हुए का। आप हॉस्टल में रहते हैं? जी मैम, मैं यहाँ हॉस्टल में घर से दूर है तो घर वालों को बुरा लगा होगा? बहुत बुरा लगता है मैम। उस परीक्षा के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरे जिस हिसाब से नंबर थे वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के नंबर थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से मेरिट ऊपर चली जाती है और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। कर रहे हो या पढ़ाई कर? अभी तो मैम पढ़ाई कर रहा हूँ, RS मेंस का परीक्षा दे रहा हूँ मैं इस बार। लेकिन जिस हिसाब से ये मैम वैकेंसी निकालने में और प्री का पेपर करवाने में जितनी जल्दबाजी दिखाते हैं या जिस तरीके की तीव्रता दिखाते हैं, अगर उतना ही समय अगर ये मेंस और इंटरव्यू में लगा दे तो एक भर्ती क्लियर हो जाएगी और टाइम पर हो जाएगी, और इससे मैम हमारा भी पैसा बच जाएगा और आने वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा। नहीं तो मैम एक वैकेंसी 3-3, 4-4 वर्ष ले लेती है और मैम ओवर एज भी हो जाते हैं। ओवर एज का भी किस्सा रहता है मैम। कोई सरकारी नौकरी चाहता है मैम, सब ये और इसीलिए सब लोग ये एग्जाम देना चाहते हैं। जी जब मैम। पेपर लीक होता है, सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि हमें शायद कोई एक अच्छी नौकरी मिलती, वो नहीं मिल पा रहा। जी मैम। हाँ, जी मैम, मेरे साथ 2021 में मेरा 3rd ग्रेड का पेपर था। वो पेपर लीक हो गया। उसकी मैं मतलब 4 साल से प्रिपरेशन करने में लग रहा था, फिर भी वो पेपर लीक होने के बाद मैं अगेन वापस स्टार्ट किया। 2nd ग्रेड का पेपर स्टार्ट आया तो उसकी मैं प्रिपरेशन करने लगा। 2022 में वो पेपर भी लीक हो गया। वो रोडवेज वाला, वो बस वाला मामला हुआ था उसका। उस मामले में पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं मेरी जॉब में वापस लग गया। ओह, तो अब आप एग्जाम नहीं देना चाहते? नो मैम, मेरे इस घर वालों का भी नहीं, मैंने दबाव इसमें होता है ऐसे सिचुएशन में, बिल्कुल मैम, क्योंकि बिल्कुल पैसे तो खर्च हो रहे हैं। जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, पैसे तो खर्च होते हैं। जी बिल्कुल मैम, घर वालों का काफी बहुत ही ज्यादा दबाव आने लग रहा था कि प्रिपरेशन में 6 साल खराब कर दिए, ना कोई पैसे का बंदोबस्त, ना कुछ भी वो नहीं था। हाँ, इनको एक भी माइक दीजिए। आप लोग कोशिश करते हो कि किसी से तो बात करें, सरकार से या किसी से बात करें? क्योंकि मैंने देखा कि 1-2 कोचिंग सेंटर को डिमोलिश किया गया, बुलडोजर लगाया गया। सरकार ने ये उम्मीद भी दिया है कि न्याय होगा आप लोगों के साथ। एक इनका, हाँ आप बोलिए। जी मैम, हम तो कोशिश किससे करें। 2021 के अंदर मैंने 2021 में मैंने रीट 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया था। उस समय वो रीट का पेपर लीक हो गया, वो कंटेनर पलटाया था। कंटेनर पलट गया। कंटेनर पलटने के बाद सब लोगों ने कहा पेपर आउट हो गया। उसके 3-4 महीने जाके फिर मतलब सरकार ने एक्सेप्ट किया कि पेपर वास्तव में वाकई में आउट हुआ है। उस 4-5 महीने तक तो सरकार ने मतलब स्वीकार नहीं किया कि हमारी सरकार के अंदर कोई पेपर आउट हुआ है। फिर वापस हमने 3rd ग्रेड की तैयारी की नहीं, वापस 2nd ग्रेड की तैयारी के अंदर मैं लग गया। तो दिसंबर 2022 के अंदर मेरा 2nd ग्रेड का एग्जाम था। उसका पेपर ग्रुप A का जो GS का पेपर होता है, जीके का, वो पेपर आउट हो गया। उसका आउट होने के बाद थोड़े टाइम बाद में सभी वो GS के जो जितने 4 ग्रुप बनाते A B C D, चारों के 4 रद्द कर दिए। उस 3-4 महीने के बाद वो करवाए वापस।
तो इतना किसी को समय मिल नहीं पाता है। वो बड़े शहरों के अंदर रह के 10-12 हज़ार जहाँ पर मंथ के खर्च होते हैं, वहाँ हम नॉर्मल किसान परिवारों से आते हैं, तो यहाँ बड़े शहरों के अंदर साल उधार भी लिया किसी ने फैमिली से? किसान उधार भी लेते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? कई उधार भी लेते हैं, और हमारे घर वाले मेहनत करके मतलब है ना ये चाहते हैं कि भाई कहीं लग जाए सरकारी जॉब। ये भी आरोप है कि बहुत सारे जो नेता हैं जी वो भी शामिल है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, इस तरह का काफी रेड हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। क्या ये भी एक दिक्कत है कि अगर नेता लोग खुद अपने उनके परिवार के लोग खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व हो या पेपर लीक वाले मामले में इन्वॉल्व हो, तो सुनने वाला कोई नहीं है? नेताओं का संरक्षण है, इसीलिए ये होता है। मतलब ये सुरेश, आप भी इस बात से सहमत हो? यस मैम, मेरा भी JN का पेपर लीक हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी थी उसकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। वो लीक होने के बाद फैमिली वालों का भी प्रेशर रहा कि क्या हुआ, अगला पेपर कब लगेगा ये। फिर लेकिन इसमें नेताओं का ही हाथ है मैम, साफ सीधी बात तो ये है, वरना अगर उनका हाथ नहीं होगा तो कहाँ से लीक होगा पेपर। बोर्ड तो उनके हाथ में ही चल रही है ना सारी की सारी, बस यही बात है। तो आप लोग सब वोटर हो? जी मैम। हाँ मैम, आप लोग सब वोटर हो, तो जब आप वोट देने जाओगे क्या ये सब मामला भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट होगा? इम्पोर्टेंट होगा मैम। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा मैम, भर्ती टाइम पे चाहिए होगी मैम। लेकिन अभी वादा तो बहुत किया जा रहा है कि पेपर लीक अब दोबारा नहीं होगा। मैडम पिछली बार भी यही वादे किए थे सरकार ने, क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ मैम। वही सेम चीजें रिपीट हुई, वही पेपर आउट हुए, कुछ ही नहीं हुआ मैम। अभी EORO का एक पेपर हुआ था 14 मई को, और वो पेपर के अंदर मैम इतना इजी पेपर बनाया था, 120 सवाल थे, और उसमें से नगरपालिका अधिनियम जो होता है उसकी टोटल धाराएं जो होती है 397 धाराएं थी, और उसमें से मैडम बेसिक धाराएं सवाल परीक्षा में पूछी गई थी। और उस पूछने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि पेपर लीक हो जाएगा तो और मेरिट ऊपर जाएगी, इसलिए हम ये कह सकेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो ईजी था। और ये आरोप जो है वो RPSC और RPSC हालांकि एक संवैधानिक निकाय है, उसके बारे में ये कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें नेताओं की और उनके अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी सह के नीचे, उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अभी RPSC के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो मैम सिर्फ दिखावी है, सिर्फ अखबारों के तक ही सीमित है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो हमसे सिर्फ जी मैम, बाबूलाल कटारा नाम के, और उनकी मैम संपत्ति और बहुत ज्यादा मैम फ्रस्ट्रेशन है। और EORO के पेपर की मैम लेवल देखे तो वो बिल्कुल ही मतलब क्लास टेस्ट के लेवल था, जो 8वीं 10वीं के क्लास टेस्ट लगते हैं उससे लेकर। सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो सरकारी नौकरी? प्रदेश में वो रोजगार ही नहीं है, प्रदेश में रोजगार नहीं है। औद्योगिकीकरण की तरफ सरकार कोई कदम ही नहीं बढ़ा रही है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक मतलब रोजगार कैसे क्रिएट होंगे? जब तक अगर इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या है कि सरकारी जितने भी बेरोजगार है उन्होंने मतलब वो सारे के सारे सरकारी नौकरियों पर निर्भर है, क्योंकि औद्योगिकीकरण की तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। ना तो कोई ढंग की औद्योगिक नीतियां आ रही है, ना उनके लिए कोई ऐसे सरकार कदम बढ़ा रही है जिससे रोजगार क्रिएट हो सके प्रदेश के अंदर। Okay, so this is a pan-India feature. Jobs is something which everyone who is young really is looking for, and there's always an attraction as far as government jobs go. And therefore, when paper leaks out, when they have to wait, many of them are taking a loan and they are waiting, their family is putting pressure on them that you need to have a job because you have to carry on their family. The future seems bleak. But will these elections change things for them? Will the politicians keep their promise? Well, one certainly hopes so. So we've got Mr. Rajavardhan Rathore with us at this point of time, contesting the thing. You know, pagdi is baar kiske sar pe? That's the question everyone is asking. प्रधानमंत्री मोदी जी के, because he is the face. So प्रधानमंत्री मोदी जी परिभाषित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का शासन लेकर आती है. The level of accountability, the level of commitment, self-auditing and public auditing of all our actions. Every penny accounted for. And when we say in the service of the nation, it is literally you have to empower the citizen to become even more stronger in every way, financially, emotionally, physically, in every way. So every facility that is provided to the citizen needs to be such that it helps the citizen perform even better. So that is the whole purpose of governance, is This it? whole double engine ki sarkar which is spoken about, you think that's going to be the USP for the BJP? The same government in power, the centre and the state level works? See, literally, in a
in a democratic institution, especially ours, where where your boundaries are very clearly demarcated for state government and for central government, and it's very difficult to intervene into each other's sort of boundary. For example, water is a state subject, education is a state subject, sports is a state subject, right? Now, how do you intervene when Prime Minister hands over 29,000 crores to Rajasthan to deliver drinking water via tap to every household? He gives 29,000 crores, but the state government is the one who's actually supposed to execute it. They don't execute it. Number one, they don't add their share of the money into it, right? And secondly, whatever amount of money they spend, which is 8,000 crores, 29,000 crores was given, they spend only 8,000 crores. And even in that, there's a scam going on. Right? When you talk about scams, Mr. Rathod, the size of the pipe, the sort of cement used or bajri used or mud used in the construction of the water tanks, the connection to the households, nothing is existing. So I took a Disha meeting. Disha meeting is in the collectorate, and I was heading it. And the committee for the water, they gave a presentation to me, and they said 33% of work has been done in your constituency. So I asked them a question that if 33% work has been done, how many sarpanches have actually signed on it and accepted it? None. As on date, not a single sarpanch in the entire Jaipur Lok Sabha has signed on accepting the work that has been done by Jal Jeevan Mission in the state. So I said, now this is all fraud if they haven't accepted it. So I said, let's go and have the meetings in Panchayat Samitis. So we did 5 Panchayat Samitis, and everybody was gunning for the throat of all of these officers because they were blatantly lying. So that is the state of affairs. So that is why, I'll come back to your question. So that is why a government, a state government which is actually executes the task given by the center transparently and efficiently is what is required to actually get the state to move ahead. But what the Congress party is saying is that there never is actually a scam, and the BJP does it before every election. You misuse the ED, CBI. And I know there have been reports of scams and irregularities in Jal Jeevan Mission as well in the state. No, so there are clearly cases which the state government, it's come out in the newspapers that the quality required for a contractor was so and so, and that contractor was not authorized a contract worth 1,000 crores, but yet he was given a 1,000 crore contract, so obviously he can't deliver it. Another example is the MLA from Congress MLA from Jamwa Ramgarh. How come he's so qualified that now his brother has become the contractor for delivering water in every house? Suddenly, the brothers of MLAs become efficient sort of builders, right? So that is because they are being incorrectly handed over huge tenders. Say, for example, what happened in the paper leaks, and especially the most infamous one, the REACH paper, where 10,000 students or candidates participated in the examination. The entire conduct of that examination, which was happening after 3 years, mind you, so that's why this large number of candidates were there, 10 lakh candidates. The whole conduct of that examination was supposed to be with the education department, and rightly so. The education department hands it over to an NGO, and guess which NGO? Rajiv Gandhi Study Foundation. Brilliant. Fantastic. And who's heading that Rajiv Gandhi that study foundation or something like that? Who's heading it? Chief Minister Ashok Gehlot is heading it. Isn't that fantastic? And then you have a paper leak. I mean, if it was delivered efficiently, one can understand that. All right, you did well. So you have repeated paper leaks, and these papers are going to certain academies. Those academies are run by children of ministers. So isn't that there's something wrong? So there needs to be an inquiry, but they won't allow the CBI. They'll say, no, we'll conduct the inquiry ourselves, but they don't conduct it. So for heaven's sake, at some point of time, somebody is going to intervene. So after 4.5 years, the central government intervenes
Now says, no, elections are going on. So what did you do for 4.5 years? The people appointed in RPSC. RPSC is the recruitment body, right, of the state government. The political appointees of the RPSC are themselves on video asking for 18 lakh rupees to sort of pass you in your verbal examinations. And again, guess what? Whose family passes the entire interview in RAS? The Minister of Education of Rajasthan, his family passes. All the members of the family become RAS, and they surprisingly achieve far higher marks in verbal examination than the written one. They are the highest in the verbal examination. Isn't that brilliant? Right? The entire intelligence sort of resides in these Congress families. I heard the HM also promised that should the BJP come to power, they will ensure that no paper leak takes place. Is that going to be the priority of the BJP should your party come to power in the state? If a paper has to be conducted, if a question paper has to be conducted, there cannot be a question paper leak. It's as simple as that. Take an example of Prime Minister's Office of India. You're very well aware, Pallavi, that before 2014, any decision being taken even in the Prime Minister's office was known much before the letter was even typed. You're smiling now, right? That's the fact. Now, it cannot happen. It's not supposed to happen. It will not happen. Similarly, if the paper leak nahi hona, to nahi hona. Khatam baat na. You ring a few people, ring them by the neck. That's the end of it. Finally, you are comfortable with the idea of an MP contesting as an MLA? I can answer that in multiple ways. Let me answer it in one of the ways. It's an education for me. In my life, I've been a student of whatever I do. If it was sports, I learnt it, right? From class KG to the highest class. If I was army, I learnt it from the basics to the highest, right? In politics, I was blessed to, without having a mentor, without having a godfather, a person like me gets a ticket without asking in 2014. He gets to be made a minister, right? I learned there. My own PR is the worst. That's what my friends used to say when I was competing in the Olympics. But then I learned from Mr. Jaitley. He was my minister, and Prime Minister Modi. So I learned there. And then I get a ticket again in 2019, right? I get a ticket. So I've now learned what happens at the largest level of democracy in India. Now I am learning the grassroots politics. Isn't that brilliant, right? If I call it the close hand combat of politics, guttham gutha ki ladai, right? Right? In the military terms, this is where the battle takes place. It's much cooler and safer at the Lok Sabha level, right? This is where the battle takes place. And so if I'm going to get into this, I'm going to do it, right? And I'm going to learn it. So one point of view is that. The second point of view is that, again, Prime Minister has, if he has confidence in us that we've learned from him, and then we could deliver the similar kind of governance along with our colleagues who are already MLAs, who've been MLAs here, along with them. So it's mixed people up so that you can have the same sort of governance that is happening, which is accountability, which is happening at the national level, at the state level. That's when you have governments that can synchronize with each other. Okay. Thank you very much for speaking to CNN News 18.